एक इंस्टांस डिजरेली ने ग्लैडस्टोन से कहा, आर्थिक संदर्भ में चर्चा हो रही थी, मिस्टर ग्लैडस्टोन, I would like you to tax the rich people and leave the poor. Do not rely upon indirect taxes. For that, classic reply given by Gladstone was, look, both direct and indirect taxes are like two charming sisters. I love them both. Though in the family parlance it may be called immoral, bigamous, because they are both charming. I love them both, but in this I give a little more love to indirect taxes. The second sister, because she is more charming, she is more yielding, and she is more welcome for exploitation. Therefore I depend upon this source, though I do not give up the other source. ये उदाहरण मैं समझता हूं गुरुपद स्वामी ने इसी सदन में कहा था, और वीपी सिंह साहब फिनेंस मिनिस्टर थे. तो वीपी सिंह साहब क्या कहते हैं सुनिए. The other sister has been more yielding. I just wanted this reference to be put without any comment, without any further observation for the Honorable Finance Minister and for the government. So, मैं अभी जब बाकी सदस्य बोल रहे थे या जब मोशन मूव किया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो मैं सोच रहा था कि गांव में या छोटे शहरों में बैठा व्यक्ति अगर टेलीविजन पर ये देख रहा होगा कि अप्रोप्रिएशन बिल पे चर्चा हो रही है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल और इतने लाख करोड़ उसके लिए मायने नहीं रखते हैं. वो अपना संदर्भ देखना चाहता है कि मेरी थाली में इसका क्या हिस्सा आ रहा है, मेरी थाली का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हालात हैं, मेरा बच्चा जो प्रतिदिन निकलता है घर से रोजगार की तलाश में और शाम को वापस घर आता है और उसके हाथ में सिफर है, शून्य है. तो अर्थव्यवस्था और अर्थतंत्र को हम आम इंसान के नजरिए से अगर देखें सर, तो हाहाकार का विषय है. अब आंकड़ों की बात मैं करता हूं. मैं मानता हूं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया, प्रधानमंत्री जी बेहद लोकप्रिय है, अरे कोई संदेह नहीं है, सचमुच बेहद लोकप्रिय है. लेकिन अगर एक एजेंसी का आंकड़ा अप्रूवल रेटिंग एक्सेप्ट करते हैं, तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, हंगर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक स्फीयर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं. सांख्यिकी के साथ सर एक अद्भुत चीज है कि उसका इस्तेमाल कई दफा लैंप पोस्ट की तरह लोग करते हैं. जब शराबी लड़खड़ाने लगता है ना, तो लैंप पोस्ट पकड़ लेता है. तो मैंने कह रहा सर, ये कोट है कि लैंप पोस्ट की तरह भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है ताकि आप लड़खड़ा के नीचे ना गिरे. सर, मैं अभी एक चीज सोच रहा था कि आप इन्फ्लेशन को लेकर, कई सदस्यों ने कहा मैं 6.7 हो गया फरवरी में, ये नहीं कहूंगा, ये हम आप भी महसूस कर रहे हैं, और हम तथाकथित ऊपरी तबके के लोग हैं. अगर महंगाई को देखना है ना सर, तो आंकड़ा सीपीआई इस इंडेक्स से नहीं, सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, वो सीपीआई वो वाला, तो सीपीआई उस आंकड़े को देखिए कि लोगों की जिंदगी को ये कैसे प्रभावित कर रहा है. उज्ज्वला एलपीजी के बारे में नहीं कहना चाहता. अक्सर हमारे पेट्रोलियम मंत्री बाकी लोग कहते हैं कि सरकार नियंत्रण नहीं करती है कीमतों का. तो साहब 5 महीने चुनाव के दौरान कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? अगर 5 महीने चुनाव के दौरान कीमतें नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार के सरोकार का ताल्लुक है. तो आप ये रिलीफ लोगों को दीजिए ना. मध्यम वर्ग की कमर टूट रही है सर, उसकी सेविंग्स को देख लीजिए. कोविड ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया. आप चुनाव जीतते हैं, आपको मुबारकबाद, लेकिन दिक्कत और परेशानी कल को आपको भी होगी कि अगर इंसान के बुनियादी मुद्दों से चुनाव के परिणाम का ताल्लुक नहीं रहा, तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहा. सर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मैं भी अगर आप सच पूछे कि जीरो बिठाने बोल दीजिएगा तो मैं शायद ना बिठा पाऊं, क्योंकि 1000 लाख से करोड़ जाते ही शून्य की संख्या समझ में नहीं आती है. लेकिन सर, ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बिहार है, क्योंकि बिहार के बगैर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आप $5 ट्रिलियन के शिखर पे जाएंगे तो हमारे बगैर तनाव महसूस करेंगे, अकेलेपन का एहसास होगा. बिहार को छोड़ करके हमारे एक बिहार के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं. सर, बिहार की स्थिति बहुत गंभीर है, और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रिटोरिकल पॉइंट नहीं है. हर क्षेत्र में बिहार की हालत खराब है. रोजगार को ले लूं, सामाजिक सौहार्द को ले लूं, गरीबी को ले लूं, भुखमरी को ले लूं, पलायन को ले लूं, क्या छोड़ूं क्या लूं.
लेकिन बिहार अगर प्लीज सर प्लीज बड़ी माफी के साथ मनोज जी प्लीज सर 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं सिर्फ अगर ये कहूं ना, मैंने शुरू में ही आरंभिक मेरे पॉइंट को देखिएगा, मैं एप्रोप्रिएशन और बजट के नजरिए को आम इंसान के बात के जहन से देखना चाहता हूं। अगर इतनी साधारण सी चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, ईश्वर भला करे। मैं सर वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा था। मनोज, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब सर नीति आयोग, मैं इसलिए ये चीजें माननीय वित्त मंत्री साहिबा के समक्ष रख रहा हूं कि उनके जहन में ये होगा। नीति आयोग का बिहार के बारे में टिप्पणी नाम देखिए, आपको चिंता होगी। हम वैचारिक रूप से अलग हैं, पॉलिटिकली अलग हैं, लेकिन बिहार आपकी चिंता का विषय नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहां खड़ा हुआ है बिहार? और फिर भी सर 1-2 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं लूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के सर, बेरोजगारी को लेकर के मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं, अगर हमारी अर्थनीति रोजगार सृजन नहीं कर पा रही है तो ये अनर्थ नीति है, अर्थनीति नहीं है। अभी मुखर्जी नगर में बच्चे बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सब किस चीज के लिए? रोजगार एक मौलिक चीज है, यह खैरात नहीं है, संवैधानिक। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखिए, उसमें इसका जिक्र है। सर आखिरी सोशल सेक्टर को लेकर के, खुद पिछली बार भी मैंने कहा था, सोशल सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है, जो बजटरी एलोकेशन है, या तो नेग्लिजिबल इंक्रीज है या डिक्रीज है। और ये सोशल सेक्टर, सर बस आखिरी 1-2 पॉइंट कहने दीजिए, सोशल सेक्टर शेप करता है आपका भविष्य, आपके देश का भविष्य। खास करके ग्रामीण उपभोग को अगर मैं देखूं, वो भी एक चिंता का विषय है सर। 8 वर्ष में सबसे नीचे है। एमएसएमई में 40% एमएसएमईज either have closed down or are on the verge of it. Those of us who believe that the government is very transparent on corruption, zero tolerance. Let me quote 2020 Transparency International Corruption Perception. We are occupying 80th position. मैं क्यों कह रहा हूं कि इसी की रिपोर्ट लेकर के यूपीए के खिलाफ, सर बस आखिरी इसी की रिपोर्ट लेकर के यूपीए की सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था। आखिरी सर, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि जब तक हम अपने एप्रोप्रिएशन बजटरी एलोकेशन को एक आम इंसान के नजरिए से, मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग के नजरिए से नहीं देखेंगे सर, तब तक हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं होंगी। चुनाव के नतीजे जो भी हो। आखिरी सर, जय हिंद से पहले, जो मैं सर्वसजदा हुआ कभी, नाम फाइनेंस मिनिस्टर आपके लिए, जो मैं सर्वसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जय हिंद। श्री विनय विश्वम। थैंक यू। A finance minister has to come with a appropriation bill. It's known to everybody. It has been the practice, it will continue. But when a government like the present government comes to the House with such a bill, we are obliged to ask a question. How this money was spent? For what purpose it was spent? In what direction the government wants to lead this country's economy? So on all these questions, we are not having a promising answers. I must say, not the fault of a finance minister, the fault of a government led by a very disastrous policy on its economics. Sir, everybody was talking about some other languages, but I want to speak in my mother tongue one sentence. ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നു. I oppose this bill because this can only be opposed. So today in the morning, I raised an issue here in the House
regarding the women participation in the employment. It fell down to 17.2% in April-June 2021. Labor force is the force that creates the wealth. And that force is most significant for the country's future also. But the government forget them. Among the labor force, women consist a very important role. But in this country of ours, the share of the women, it is not going up, it comes down. And the government always closes its eyes to this fact. That's why we ask the question, where this money was spent, for what you spent the money. We all know very well about the term NPA, non-performing assets. A finance minister who is very, very calm and cool on this issue is a wonder for me. And you find a solution, and that solution is haircuts. I am very sure, Madam Nirmala Sitharaman is well aware of the haircut theory. Sir, haircut theory is nothing but a gimmick of figures. In fact, non-performing assets are performing as non-performed. Nothing is getting back to the government, but a part of it given to them, and the government close the eyes to the rest of it and say that that question is solved and resolved forever. So this kind of haircut and headcut issues, tactics and gimmicks will not help the economy. And this appropriation also is going to make a very negative impact on our country and on its people. What will you give for the MSMEs? What will you give for the people working in the informal sector? They are the maximum in this country's workforce, and the government forget them. So the budget, even though it was acclaimed by the people in the treasury benches as a budget of a growth scenario, the fact is telling us that budget is a budget of decline, a budget of disaster, because that budget was silent on very important issues. What about subsidies? About food subsidy? What about Manrega funds? What about health sector? What education? On all these sectors, this government's budget is really disappointing to the country. But Madam Nirmala Sitharaman, out of his skill on languages and her goodwill, is trying to tell the country that this budget is going to help the country to reach that goal that they proclaimed. What was the goal? The goal was a $5 trillion economy, $5 trillion economy. And how far we are now. When we heard that statement for the first time, we were at a certain point. Now when we hear it once again and twice again and many times again, we know that we are lagging behind. But still the government is making that words, which are hollow words before the country. And that government is coming to the house with a bill for appropriating money. Sir, this appropriation for what? Sir, is this for the people to be killed? Is it for the army to be strengthened? Is it to buy the bullets and guns for the people to be destroyed? All these are my questions. And that's why I told this cannot be supported, this can only be opposed. About the cryptocurrency, she spoke in the speech also, digital economy. And that economy is coming to the scene in India. The country is worried about that. Cryptocurrency, in fact, is doing a harmful work on the economy. And nobody is sure how authentic it can be. But the government very, very peacefully is saying that digital economy is coming to save us. What about the Paytm scam? Scams are coming up, propping up every day.
Big people whom we thought that are the big saviors of the economy, or the banks and institutions, they are all now facing the music. The government knows it, and the government folds its hand in support of them, and powers are with them. And those powers are just doing their service, not the service of the nation or the poor people. Sir, the workers, the peasants, they ask the government, do you remember us only when elections come? Yes, when polls are coming, you remember them. Once it is over, you forget them. The country cannot close the eyes to the fact that the LIC, the GIC, the public sector, everything is going to be finished up by the government. I don't want to tell you the whole figures of that. LIC, it's a goose that laid eggs that are golden for this country. And that goose is going to be killed by you. The GIC is also facing a trouble because of the government's policies. The PSUs are also going to be owned up by this country, by the ministry. So the finance minister, even though very, very vocal, when speak about Atmanirbhar Bharat, is in real times is doing very, very dangerous steps about the Atmanirbhar concept itself, because the government is now supporting the FDI. I wonder how a government and a party talking so loud about the country's Atmanirbhar, that government is now with begging bowls before the FDI. We know what is FDI. It is foreign direct investment, and that investment is from the corporates of the world. The whole economy is now being surrendered before them, and appropriation is also trying to support that view. So let me finish with the words. We are not expected to be with that move. We oppose it, and we continue to oppose it, and we say that this kind of a policy is not for the benefits of India. India is the country where the maximum people who are poor are living. The country of the hunger, the country of the hungry people, the country where children dies before the age of 5 years of age. This is the country where the maximum number of women are facing the difficulties due to anemia. This is the country where the maximum number of people, crores of them, have no huts to live. And our people, starving people, those don't have the clothing properly, don't have the place to live, no water to drink, safe drinking water, no safe air, and this country is the house of those kind of crowds of people. But you are thinking about the corporate funds of events, the FDI funds of events. For them, you come with the budgets and appropriation bills. And I oppose this once again. I conclude here. Thank you. Thank you. Dr. Faujia Khan. Thank you, Vice Chairman, sir. Mike. Mike. Mike on correct. Mike on. I am here to discuss on the reappropriation bill, sir. It has often been mentioned on the floor of this House, sir, that infrastructure in our nation is growing. Road infrastructure, railway infrastructure, government buildings, smart cities, also the Central Vista, which is growing as an urgent priority. But, sir, while I appreciate the government for all these efforts, my question is, at the same time, shouldn't our concern be on the rising economic disparity that is there in the nation? Isn't it a cause of great concern, particularly post-pandemic? Sir, when businesses are permanently shutting down,
Laborers are migrating with no intention to return. Consumers are increasingly becoming reluctant, and the RBI underlying the fact that some of the damage to India's GDP is permanent. Sir, we talk about unemployment, and it is said that more than 3 crore youth have lost their jobs during this pandemic period. So our economy must truly carry the benefit to every section of society. So veins and arteries carry blood to every part of the human body. If one part of the body doesn't receive the blood, it dries up, it paralyzes, it dies. In the same way, sir, there is an Urdu poet who has spoken very well about this, Mirza Ghalib. Everybody must have heard his name. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, फिर जो आंख से न टपका तो वो लहू क्या है? सर, लहू अगर सिर्फ रगों में दौड़ रहा है तो उसका क्या फायदा है? जब वो आंख से टपकता है दर्द बनकर, तब वो सही फायदामंद है अपने देश के लिए। सर, तो मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से यही कहूंगी कि आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो है, लेकिन उस दर्द की भी जरूरत है जो हमारी हर घर की एक महिला आज अपने घर में सह रही है इस महंगाई के दौर के दौरान। सर, when we talk about publicity and broadcasting, I would like to say that we should increase the budget for publicity and broadcasting. Everywhere you turn your head, you go on the road, everywhere you turn your head, there is a poster which is showing you the achievements of the government, proclaiming these achievements: free ration, free vaccines, gas connections, toilets. While I have no objection, sir, to this proclamation, I wish to add that these digital banners at petrol pumps, these advertisements must also carry, must mandatorily also carry schemes for the poor, how to apply for these schemes, how to take benefit of these schemes, sir, PMAY, Ayushman Bharat. My own experience, sir, is that many people, they are hospitalized, they spend money, and then they call up and ask us, okay, ma'am, please give some money. We have spent so much money on our medical bills. And we tell them, oh, there is a government scheme. Why don't you take advantage of it? They said, abhi ho gaya, ma'am, ab aap humko madad kijiye. Humko pata nahi tha. Pata nahi tha. That is very important. So wherever we are proclaiming our achievements, we should also proclaim our responsibility. And we should also make sure that the people come to know about the schemes that are there for them. Years and years these schemes sometimes are unutilized. Sometimes people don't know, and the poor people are the real beneficiaries, don't take advantage of it. So if we do this, sir, it will be Sacha Saath, Sacha Vikas. And I think that's what we have to move to. Sacha Saath, Sacha Vikas. सर, डिफेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। 5.2 lakh crores have been allocated for the defense budget, which is 9.84% increase over the last year, sir. The revenue budget, which is mostly based for establishment, 2.33 lakh crores, increased by 16,000 crores. But sir, the major expense, defense capital outlay, 1.52 lakh crores, has seen a 12.2% decline from last year. Reason, funds have not been utilized. Sir, for R&D, only 11,981 crores has been allocated, from which also 25% is for startups and private industry. Sir, the war, today the Russian
Russia-Ukraine war has posed a big challenge before the world. And although I really feel that the strategy that our nation has adopted is laudable, we have been trying to maintain a balance, but it also draws our attention to the fact that we need to become self-reliant in defense as soon as we can. We cannot be doing it in the way gradually as we have been doing it all these days. And therefore, we have to have more spending on R&D, sir. We have spy softwares coming. There is technological advance. Now, this technology is also posing threats, security threats before us. So when we import war equipment, we have to be cautious that there is spyware, there is cyber warfare, and for instance, sir, we have purchased fourth generation fighters from France recently. Now, we have to depend on France for maintenance, for technology, for trainings, for everything. So when we buy something from somewhere, we have to depend on that country, and we cannot go against that country, even if strategically we feel that we should have a stand. That is our compulsion. The world has moved to fifth and sixth generation Air Force, especially the Air Force, where they have moved to fifth and sixth generation fighters, sir. So our effort, my point is that our effort on R&D must be focused on, must be speeded up at a much higher pace than it has ever been. And this is what I would like to I would like to request our Honorable Finance Minister that this should be our focus if we really want to become Atmanirbhar. Sir, Arun Mishra in his article today, in today's Indian Express, has said, I would like to quote that, the de-Russification of the armed forces and the genuine Indianization of India's defense technological and industrial base is necessary. We need to de-Russify ourselves. We cannot depend on Russia all the time. And therefore we have to become Atmanirbhar. Sachi Atmanirbharta isi mein hogi, sir. Sir, when the government learns to listen, when the situation demands it, and when the opposition learns to appreciate when the situation demands it, democracy can move forward more resolutely and more strongly. So just as my colleague, Mr. Manoj Jha, he made a comment saying that, he quoted something saying that I will not make any comment on it. I would also like to quote a Turkish proverb. The forest was shrinking, but the trees kept voting for the axe. For the axe was clever and convinced the trees that because his handle was made of wood, he was one of them. So, sir, I wouldn't like to make any more comment on this. At the end, I will only like to say, ma'am, that Elon Musk had dreamed a dream. He had dreamed a dream that he would like to make travel into space more affordable for people. And that became his greatest selling point, to the extent that he became the world's richest man at one point of time. Ma'am, our greatest selling point ought to be our Atmanirbharta. Sorry to say, we have still not been able to make that our selling point the way it should be. Because marketing the government's achievements is not our aim. Our aim is to benefit the poor, the middle class, and to remove the economic disparity that is there in our nation. Thank you, sir. Shri K. Ravindra Kumar. Thank you, sir, for this opportunity for speaking on appropriation bills regarding supplementary demands for grants 21-22 and excess expenditure during 18-19. By taking up these two bills for discussion and passing this August House,
is meeting an important constitutional provision. The provision stipulates that not even single rupee can be spent by the government of the day without the approval of the Parliament. These provisions and processes also ensure that there is no misappropriation of monies sanctioned by the Parliament for various items of specific expenditure. Funds sanctioned for ensuring the health of the people cannot be spent on building guest houses. If it is done, it amounts to misappropriation and serious misuse of sanctioned funds besides blatant violation of the constitutional provisions and sanctity of the legislative approvals duly accorded. The Parliament and other legislatures of the states are mandated with the responsibilities of preventing such misuse of monies collected from the people. But unfortunately, this kind of misuse of funds has become an order of the day and routine in case of present Andhra Pradesh government. There is no sanctity for budgeting, expenditure norms and accounting the expenditure transparency in Andhra Pradesh. This is all because of serious financial indiscipline in the state. The finances of Andhra Pradesh have been converted into big black hole by the present government in my state. Whatever the central government gives through the state further to the approval of the Parliament, whatever the people of the state are paying in the form of the various taxes is vanishing into this black hole. These are the total lack of accountability and transparency in the spending by the state government. All this because of the total collapse of financial discipline on the part of the Andhra Pradesh government. These are not, sir, these are not my words. Two respectable honorable ministers of the state for finance of the central government have gone on record very recently pointing out lack of financial discipline and gross mismanagement of finance in Andhra Pradesh. Minister of State for Finance, Shri Bhagavat Karad, during his recent visit to Vijayawada, has stated in public that there is no financial discipline in Andhra Pradesh. This was further elaborated by another Honorable Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary, in his recent letter dated 11th of this month to one of my colleagues in the Lok Sabha. In this letter, the Honorable Minister Chaudhary pointed out some irregularities committed by the Andhra Pradesh government with a few examples. He revealed that for the financial year 1920, so the state government has wrongly classified 4,378 crore as capital expenditure. This is effect means that expenditure on other items was shown as capital expenditure. I raise this point because to encourage capital expenditure, central government encourages states through borrowing and other means. By inflating capital expenditure through wrong classification, deliberately Andhra Pradesh government is widening the window for borrowings. This is totally unjustified as it affects the future of the people on the state of the burden mounting loans. You sit down. In fact, this has become the modus operandi of Andhra Pradesh government, borrowing every day for every source by misleading the central government with wrong report of expenditure. The state government is borrowing in a deceitful manner. It is cheating the people of the state and the center as well. There is yet another equal serious dimension to the state financial mismanagement by the Andhra Pradesh government. Minister of Finance Pankaj Chaudhary in his letter also revealed that the state government has reported absent spends as expenditure incurred on disaster relief and rehabilitation during 1920 and spent those funds for next year. Money is given by the Center for Disaster Relief were transferred to personal accounts of projects, authorities, and were spent for non-relief purposes by diverting disaster relief funds. This is a clear indication of financial disaster in Andhra Pradesh which needs to be checked forthwith. Concerned over this disastrous financial management in the state, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary in his letter has highlighted the need for the government of Andhra Pradesh to take correct measures. I would like to assure this August House that the state government will certainly not take up collective measures required. On the other hand, it will continue with its financial misdeeds. It is for the central government to ensure financial indiscipline on the part of Andhra Pradesh government. I urge the center to do this
forthwith. आप लोग In the last Please sit down. revelation, Please sit down. Andhra Pradesh government has also recently misused Baji, please sit down. 1,798 crore released by the center under National Health Mission and COVID package 2, contrary to the directions of the center to transfer these funds as a single nodal account. The state government has used these funds for other items. As a result, the health of the people of the state has been put to great risk through misuse of funds sanctioned by their health. This is not enough for the center to step in forthwith and safeguard the interest of the people of Andhra Pradesh. Center should do this before it's beyond repair. As per the COG, revenue deficit for 1920 was a huge of 1486% of the estimate. For the current financial year, it was 40,829 crore for the 7-month period of April to October 2021. As against the budget provisions, only 5,000 crore planned for full financial year. It reveals an excess expenditure of 816%. The Principal Accountant General, a letter dated 4/5/2021, to the state government objected withdrawal of 41,043 rupees, bypassing the treasury unit violations. These highlights use unauthorized diversion of funds. The state government has also withdrawal recently 7,000 crores from panchayati bodies for this purpose. Nothing to do with the, Sir, appropriate. in a letter by the Financial Department, the Department of Expenditure, dated 30th 6 June 2021, the borrowing space of the state for any given year is calculated on the basis of information submitted by the state. Once the COG audited state financial accounts are available, the adjustment on account of overborrowing by the state arises due to deviation in the information given by the state, and information published in the state finance accounts is carried out. Accordingly, in the instant case, repayments and other borrowings was considered based on the information provided by the state of Andhra Pradesh via its letter dated 22/4/2021. An amount of rupees 17,923 was adjusted with the available borrowing space of Andhra Pradesh on account of overborrowing by state during earlier years. Sir, the state financial affairs in Andhra Pradesh is very serious. The state government should be prevented from eroding the sanctity of legislative authorization of expenditure and appropriation of the funds done by both the parliament and the state legislature. A $5 trillion economy of India cannot be built on financial misappropriation and willful wrong reporting as is being done by Andhra Pradesh government. This is the time necessary intervention by the center before it goes beyond repair. Thank you, sir. Thank you. Srimati Priyanka Chaturvedi. Before time I complete. Thank you so much, Honorable Sir. So firstly, to get this out of the way, the appropriation number 2 Bill 2022 and number 3 Bill 2022, I stand to oppose it. Now that I have that out of the way, sir, एक कवि धूमिल हैं, उनकी 2 पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। सर, जिस तरीके से जो बजट आए जा रहे हैं उस पे विकास को लगाम लगा दिया है, प्रजातंत्र को लगाम लगा चुके हैं सरकार ने, बजट के अलावा संविधान का लगाम लगाया हुआ है, रोजगार पे लगाम लगाया हुआ है। तो मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ना चाहती हूँ पिछले 2 महीने से, उसी से समझ में आ जाएगा कि क्या स्वाद है लोहे का। EPFO interest rate slashed to 8.1%, lowest in 4 decades. MSME suffers most during COVID lockdown. Public sector banks have MSME NPA of rupees 1,37,087 crores. Rupee sinks 109 paise worst in Asia. ये मैं अपना मन के नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस headline पढ़ रही हूँ. Industrial growth fell to 10-month low at 0.4% in December. Income of poorest fifth plunged 53% in 5 years. Those at the top surged by over 40%. Amid bilateral chill, India-China trade marks record surge in 2021. 60% saw income halve in 2 years of pandemic. Joblessness rate in double digits between April to June 2021. Joblessness rate in youths jumped to 26% in financial year 2022 quarter 1. Women 31% worse off than men at 24%.
States showing high unemployment rate. जम्मू एंड कश्मीर की बहुत बात होती है, उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है. लगाम नफरत पे लगानी चाहिए, पर लगाम आपने रोजगार पे लगाए हुए हैं. जम्मू एंड कश्मीर at 46.3%, sir. Madhya Pradesh at 31.4%, sir. Uttarakhand at 36.6%, sir. Uttar Pradesh at 24.7%, sir. ये पिछले 2 महीने के हेडलाइंस हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा अप्रोप्रिएशन है, मिस अप्रोप्रिएशन है, क्या है. मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी. मैं आपको सब दे दूंगी, सोर्स के साथ दे दूंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा. शायद आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं आजकल. I will give you all the sources, sir. Just a minute. Miss up. Yes, yes. इसको मैं चेक करा लूं. नहीं प्लीज sit down. नहीं प्लीज आप दिया जी. अगर ऐसा होगा तो हम चेक करा लें. अजय उसे करा लें. सर मैं सब ऑथेंटिकेट कर दूंगी. एनएसओ के सर्वे है सर. एनएसओ का सर्वे, उसको भी डिनाई कर देंगे. तो मैं चेक करा. अगर कुछ अनपार्लियामेंट्री होगा तो उसको चेक करा लेते हैं. प्लीज यू कंटिन्यू. आधे से ज्यादा समय झूठ बोलते रहते हो. ऑथेंटिकेट हम करें. प्लीज सब्जेक्ट पर बोलिए. प्लीज आप प्लीज. हाँ प्लीज प्लीज यू कंटिन्यू. माननीय मंत्री जी. नहीं प्लीज माननीय मंत्री. मैम also gets distracted many times. मंत्री जी Sir, I just want to be sure. प्लीज यू. हाँ प्लीज मंत्री. हाँ यू सेड. I just want to be sure if I've heard this right. It is the appropriation bill which has come here. And in its reference, if I've heard right, honorable member, misappropriation is an inappropriate word to use. If it was used for this, I'd like to draw her attention, honorable member's attention, and if it was used in this context, an appropriation bill comes for discussion and all of us do discuss it. But if that word misappropriation is used in the context of appropriation bill, I'm sorry, it's right, it's not wrong to use it here, because particularly in terms of the appropriation bill which has come in terms of the excess demand for grants is based on the PAC's recommendation, and we are taking the PAC's recommendation and therefore coming up with a appropriation bill for the excess demand for grants. So word misappropriation. ठीक है, उसको एग्जामिन करेगा, अगर होगा तो उसको निकाल दिया जाए कार्रवाई से. बस सर मुझे नहीं पता था मिस अप्रोप्रिएशन एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड है. हो सकता है आप आ गया हो सकता है. नो आई डिड आई से इट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट. आई एम सॉरी मैम, आई डिड नॉट से इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट. यू कंटिन्यू. आई एम वेरी सरप्राइज्ड. मैं अगली बार कहूंगी मिस कैलकुलेशन है तो उस पर भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो जाएगा. तो विपक्ष किस बात के लिए हम. नो अगर नहीं आप अगर कुछ भी अनपार्लियामेंट्री होगा तो उसको कार्रवाई से निकाल दीजिए. अगर है अनपार्लियामेंट्री है तो उसको कार्रवाई से निकाल दीजिए. प्लीज यू कंटिन्यू नाउ. आपका मुंह में एंटी कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग. हाँ लगाम लगा रहे हैं आप हमारे मुंह पे ही. अब Sir, I asked a question. मंत्री जी. If it was used in the context of appropriation bill, which has come in response to the PACs, I asked a question. I appreciate if the honorable member can just explain if she had used it in the context of the appropriation bill, which is in response to the PAC. And if it's not used in that context, I have no answers to give, I have no questions to ask, well within the rights of the opposition party to criticize the government. But to use the word misappropriation in the context of an appropriation bill, is it right or wrong? Was it used in that context or not, is what I've asked for. Please. So, Yeah. without any further interruption. Yeah. And I will answer to you, I will answer. Misappropriation of the way policies are handled in this country was right and pretty obvious by all the headlines I have shared. And I don't think it is unparliamentary, and I don't think it is so objectionable for anyone to take objection to the fact. Now, sir, I don't want to waste my time, nor would I want to waste Honorable Minister's time. She has very important things to do. Wow, sir, what is this? Where is the rule book? Please. Where is the rule book? A member shall not read any book, newspaper or letter except in, can I finish? Please come on. Please, except I am allowing. No, this is not
प्लीज जया जी, मैंने उनको अलाउ किया। I have a chair and allow किया। Please, जया जी, no, you can't interrupt. Please, No, shall not read. इस chair, I have, मैंने अलाउ किया उनको। Please, मैंने पढ़ सकते हैं क्यों नहीं? Please, nothing. So, shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the council. And what is being mentioned here has nothing to do with the bill that is being discussed. That is the business of the house at this point of time. ठीक है, अगर कोई एग्जामिन करा लेंगे उसको, अगर कुछ भी गलत होगा तो कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। Please you continue. Please you continue. Point of disorder. Sir, can I say, Please keep can I it. say this? Point of disorder. Please. Can I say Better. something, sir? This disorderly conduct only goes to prove my point and all the headlines that I have quoted. And I rest my case with that, sir. Now, with regards to GST compensation to the states, there was a question answer that was discussed 2 days ago, where it was quite obvious with the way GST refunds are sent back to the states, there is a delay. Nobody is questioning the formula that has been arrived by a GST council. What we are questioning is your authority of disposal to disperse the GST refunds to the state. And Maharashtra has been repeatedly asking for its rightful due in the GST. And even now, the GST dues, as per the report that was presented on the floor of this house, is 11,563 crores, which we again dispute. There's above 22,000 crores which is due to the state of Maharashtra. I wouldn't want to go back to what other members have already spoken, but it becomes important that I raise this issue, and I raise this issue with concern as a nationalist, and as much a nationalist as the other side claims to be. There has been a huge cut in the defense budget for 22-23. At a time when we are seeing a conflict rise all of a sudden between Russia and Ukraine, and disregarding the rule-based order. At this particular point in time, we are surrounded by a neighbor who does not believe in a rule-based order. And our defense budget should be working to ensure that we provide our army and our armed forces with all kinds of appropriate equipment needed for their safety and safeguarding our nation. It is unfortunate to see that there has been a cut. What really surprises me, that a party which continues to say Atmanirbhar Bharat, and we all support Atmanirbhar Bharat, we would want to see an Atmanirbhar Bharat, has a defense research spending of 0.088% in 2016-17 and 0.083% in 2020-21. And it should be a cause for worry for all of us, sir. Rising wholesale inflation. Wholesale price index rose to 13.11% year-on-year in February from 12.96% in January. It was 4.83% in February 2021. The WPI continues to be in double digits for the 11th consecutive month. And these double-digit figures should be alarming for us, because it would lead to high prices that we are already burdened under. Consumer Price Index, I won't call it CPI. CPI पीछे बैठा है. Yeah, I won't call it CPI. Please, sir. Consumer Price Index spiked to an 8-month high of 6.07%. Retail inflation rose 6.38% for rural consumers, whereas food inflation climbed by 5.85%. So, and I will continue to stick to India, not what is happening in the rest of the world, because it is the Indians at the end of the day who are suffering the consequences. I had tried to raise this in the zero hour, sir, but it wasn't permitted, but I must raise this now. Depreciating value of Indian rupee at 17.5% in the last year. It has been slumped down by over 17% in the last 5 years. It should be a cause for worry. The most important part, sir, which I think it should be a cause for concern, which I read out in the headline, and I'm sure he wouldn't ask me for source now. Please address this. Interest rates of EPFO have been slashed to 8.1%, lowest in 40 years. But at the same time, senior citizens who are non-government employees depend on these interest rate savings once they retire. They are facing a hard time with high inflation and low interest rates in their savings. Interest rates in small savings schemes such as Public Provident Fund, Senior Citizen Savings Scheme, National Savings Certificate have all been falling. Even the bank fixed deposit has fallen.
Last but not the least, sir, I wouldn't want to touch on unemployment because it's quite a touchy topic and they asked for sources, but I must tell you the sources are NSO survey which was released just recently. I hope they don't disregard that. Now to women and children. The budget, unfortunately, did not cater to children and women either. In fact, the proportion of allocation of funds for children is the lowest in the last 10 years. It's a cause of shame. Shame. In financial year 2019-20, even for the ICDS, what was allotted has been reduced. Allocations for Poshan Abhiyan decreased by 82%, from 3,400 crores to 600 crores during the same time period. So I'll take just one last minute before I end this. Now, I just want to remind my dear friends in the treasury benches, sir, just one last minute. One last minute because it's about women. Very important point. BJP's manifesto in 2004, sir, 1 minute, sir, 1 minute. कितना disruption हुआ मेरे बीच Please you में? conclude. 2014 and 19 said, 2019 का quote कर रही हूँ, women's welfare and development will be accorded a high priority at all levels within the government, and the BJP is committed to 33% reservation parliament and state assemblies through a constitutional amendment. चलिए आप reservation नहीं दे रहे हैं, आप welfare schemes पर तो ध्यान दे लीजिए, वो भी नहीं हो रहा है. 2014 में we promised the women voters that if the BJP forms a government at the center, it will pass the women's reservation bill. चलिए वो भी फिर से same चीज है जो कांग्रेस led UPA नहीं कर पाया. Sir, 1 minute. Despite introduction of the legislation for representation of women in 96, 98, 99 and 2006, it continues to languish and no further action has been taken. So considering that we are 50% of India's population, not just reservation, even the welfare schemes should be adequately compensated to the women of this country. Thank you so much, sir, and thank you for allowing me to speak. Shri Mahesh Poddar ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय. महोदय, मैं अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 और 3 जो आज सदन के समक्ष उपलब्ध है 2022 का समर्थन करता हूं. महोदय, ये दोनों बिल जो पहले के जो प्रावधान किए गए थे बजट में उससे अधिक कुछ खर्च हुए हैं और उसको बढ़ करके जो अब हो गया है, जो बिल नंबर 3 जो है 1,58,356 करोड़ और विभिन्न मदों में मात्र 10 लाख के करीब ये जो खर्च हो गया है, इसकी अनुमति के लिए इस सदन के समक्ष उपलब्ध है. बिल नंबर 2 5,204 करोड़ 57,35,163 रुपये जो 18-19 के बजट से संबंधित है उसके लिए उपस्थित है. महोदय, अभी हमारे साथी कॉमरेड विनय विश्वम जी पूछ रहे थे कि किस चीज़ में खर्च हुए अधिक, तो मैं देख रहा था, मुझे भी उत्सुकता हुई. उनकी बात सही है कि हम किन चीज़ों पे ये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने देखा नहीं होगा कि जो हमारा अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 है उसमें जो खर्च किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए किया गया और एक छोटी सी रकम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए की गई है. और जब जिसमें 1,58,000 का जो रकम है उसमें जो अधिक खर्च किए गए हैं वो मुझे खुशी बताते हुए कि काफ़ी बड़ी मात्रा में करीब 1,100 करोड़ ट्रांसफर टू द स्टेट्स राज्यों को देने के लिए अधिक खर्च किए गए हैं, डिफेंस के लिए अधिक खर्च किए गए हैं और रेलवे के लिए अधिक खर्च किए गए हैं. तो महोदय, ऐसा नहीं है जो भावना यहाँ पे व्यक्त की गई कि शायद लगता है ऐसा कि कोई फिजूल खर्ची की जा रही हो, ऐसी कोई भावना नहीं है. और माननीय मंत्री जी ने बताया भी कि ये पीएससी वगैरह की सारी स्क्रूटनी के बाद में ये प्रस्ताव आपके समक्ष आया है, जो कि प्रायः होता आया है और एक सरकार की और संविधान की बाध्यता है जिसके तहत हम यहाँ पे इस पर चर्चा कर रहे हैं. महोदय, अभी हम लोगों ने पिछले 1-2 बजट में देखा है और हम सब ने देखा है, जब ये सरकार आयुष्मान योजना की प्रस्ताव लेके आई थी बजट में, बजट भाषण में, यदि मैं सही बोल रहा हूं तो माननीय जेटली जी थे उस समय, तो विपक्ष ने बड़े जोर से ये प्रश्न उठाया था कि ये पैसा कहां से आएगा. चिंता वाजिब थी
उन्होंने कहा था कि पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, पैसे का भी हम प्रावधान कर रहे हैं। और इस योजना को लागू करने के लिए उन्होंने सारे राज्यों से अपील किया था कि सारे राज्य इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए ये योजना है जो कि गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा सकते। और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके लिए बजट में कभी पैसे की कमी नहीं होने देंगे, और ऐसा हुआ भी। महोदय, जब मनरेगा के लिए बात हुई बजट में, तो कहा गया कि प्रावधान आपने जो पिछला जो खर्च हुआ था उससे भी कम प्रावधान किया। हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मनरेगा इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इसमें जितने भी पैसे की जरूरत होगी ये सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, आज तक किसी भी राज्य ने शिकायत नहीं की है कि हमें मनरेगा के लिए पैसा नहीं मिला। हाँ, हम दो घटनाओं का, विश्व की 2 घटनाओं को ध्यान में रखें। एक तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध अभी चल रहा है, जिसके कारण चंद दिनों में ही पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गए। और दूसरा कि कोविड के कारण जो घटनाएं हुई, उसका असर हमारी भी आर्थिक व्यवस्था पे हुआ, सारे विश्व में हुआ। लेकिन मजा यह है कि इस आर्थिक चैलेंज को हमने किस तरह से आगे निकले, किस तरह से इसको संभाला, किस तरह से आगे बढ़े। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि ये संविधान के प्रावधानों का मामला है, और उन्होंने कुछ कड़वी बातें की। महोदय, विपक्ष और पक्ष के बीच में कड़वी बातों का तो कोई शिकायत नहीं होनी भी चाहिए, लेकिन तकलीफ वो होती है जब वहां पे कड़वाहट होती है। मेरे को एक ही आग्रह है कि यदि इस सरकार ने कुछ भी अच्छे काम किए होंगे, आप भी मानते हो कि हिम्मतनगर में नेशनल हाईवे बनी, हो सकता है कि आपके घर के बगल में नहीं बनी हो सकता है पुरानी सड़क में नहीं बनी हो, लेकिन नेशनल हाईवे बनी, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। यदि सारी मांग के साथ साथ एक शब्द जोड़ देते, उसका स्वागत कर देते, तो मैं समझता हूं पक्ष और विपक्ष के बीच में वो कड़वाहट की भावना खत्म हो जाती है। और मैं समझता हूं समय की मांग महोदय आज ये है कि हम पक्ष और विपक्ष के बारे में बात जरूर करें, सुझाव जरूर दें, अपने योजनाओं की आलोचना अवश्य करें, लेकिन जो हो रहा है उसे हम सकारात्मक रूप से स्वीकार करें, उसमें हम सुझाव देके आगे बढ़ें। महोदय, उन्होंने कहा कि एमपी, एमएलए, मंत्रियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं तो समझता हूं कि प्रशिक्षण राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे किसी भी दल को, राजनीतिक प्रशिक्षण उनका एक अभिन्न अंग है। और यदि हम प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी करना पड़ेगा। लेकिन महोदय, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस चुस्ती और मुस्तैदी के साथ और जिस लगन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ सालों भर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, शायद कांग्रेस में भी कभी चलाए जाते होंगे। चूंकि इतनी पुरानी पार्टी है, यह व्यवस्था अवश्य उनके यहाँ रही होगी। मेरा तो आग्रह यह होगा कि हमारी तरफ उंगली उठाने के साथ साथ वो अंगूठे को अपनी तरफ भी देखें और अपने यहाँ भी इसमें सुधार कराने की कोशिश करें। महोदय, हमारे साथी, केरला के साथी जॉन ब्रिटास जी ने कहा कि रियल ग्रोथ रेट उनको समझ में नहीं आता। स्वाभाविक है, वामपंथियों से तो हम ग्रोथ रेट नहीं सीखेंगे। महोदय, जब से मुझे होश आया है तब से मैंने वामपंथियों को देखा है। बिहार में, हमारे राज्य में बड़े सक्रिय थे और काफी लोग मानते भी थे उनको, और काफी उनके एक रैली में लाखों लोग जमा भी होते थे, ये भी हमने देखा है। महोदय, उन्होंने नारे दिए, झंडे दिए, रैलियां दी, लेकिन धरने दिए, बंद कराए, सब कुछ किया, लेकिन गो हत्या का समर्थन तक किया, लेकिन गरीबों को न तो बैंक दिया, न तो उनको बिजली दिया, न उनको पानी दिया, न उनको घर दिया, न उनको सड़क दिया। महोदय, अगर ग्रोथ का आंकड़ा, जैसे भाई मनोज जी बोल रहे थे कि एक गरीब के नजर से बजट को देखो और आर्थिक मामलों को देखो, तो मैं समझता हूं सबने देखा है। जी, केरल में भी देखेंगे। और श्रीमान जी, मैं आश्वासन देता हूं, मैं केरल में देखा हूं और देखूंगा, लेकिन मैं एक उनसे आग्रह जरूर करूंगा,
कुछ दिन तो गुजारो हमारे गुजरात में। आपने किया अच्छी बात है, क्योंकि केरल आज का नहीं, एक जमाने से समृद्ध राज्य रहा है, और जिन चीजों का आज इन भाषणों में विरोध रहा है महोदय, उसी राज्य में उन्हीं नीतियों का उन्होंने समर्थन किया और उन्हीं नीतियों से उन्होंने आगे बढ़े हैं महोदय। ये इत्तेफाक नहीं है कि इस देश का पहला प्राइवेट एयरपोर्ट, आज सारे एयरपोर्ट के बारे में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आज सारे कांग्रेसी या वामपंथी सारे लोग प्राइवेट एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के विरोध की बात कर रहे हैं। पहला एयरपोर्ट इस देश में बना तो वो कोची में बना, प्राइवेट एयरपोर्ट, जिसकी चिंता आज सामान्य सदस्य कर रहे थे। प्लीज मिस्टर जॉन बेटस, जब आपको मौका था आपने बोला आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, प्लीज आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। जब आपको मौका था आपने बोला, दूसरों को सुनने का धैर्य रखिए, धैर्य। उनको तो मालूम है, उनकी बात नहीं जा रही है, लेकिन उनको वैधान करने में शायद मेरे को ट्रैक से उतारने में एड्रेस करें मानिए, लेकिन मुझे ट्रैक से उतारने के पहले प्लीज मेरे को ट्रैक से उतारने के पहले देश ने उन्हीं को ट्रैक से उतार दिया महोदय, इस बात को हम ना भूलें। महोदय ये बात कर रहे थे अभी हमारे मनोज जी कि उनको भी कुछ इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे। हैप्पीनेस इंडेक्स एक गरीब के लिए यदि पूरे कोरोना काल में उसकी थाली में अनाज आ गया और यदि हैप्पीनेस इंडेक्स का निर्धारण करने वाले को समझ में नहीं आया, अगर एक गरीब के घर में बिजली आ गई, उसको पक्का घर मिल गया, तो भी इंडेक्स का आंकड़ा करने वाले, आकलन करने वालों का हैप्पीनेस समझ में नहीं आया, तो दोष उनका है महोदय। हमने तो IIT दिए, IIM दिए, और उनको जब मौका था उन्होंने क्या दिया बिहार को? चरवाहा विद्यालय, गैस कनेक्शन दिया, गैस कनेक्शन। महोदय लोग भूलेंगे नहीं इस बात को कि उनकी प्राथमिकता क्या थी और हमारी प्राथमिकता क्या है। महोदय हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब मौका हमें आया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप, हाँ जी, एक मिनट चुप हो जाइए महोदय। सर सदन में आने के बाद सबसे पहले मैंने रूल बुक ही चाट लिया था। 238 and 240 combined together, 238 and 240 combined together। मैं सीधी सी बात कहता हूं सर कि अनसेवरी अनकैरेक्टरिस्टिक रिमार्क्स आप अगर देंगे तो कम से कम हमने अपनी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं किया है कि आपको तंज भी ऐसी जुबान में की जाए। चरवाहा विद्यालय समझने के लिए आपको को फॉलो करें, चरवाहा विद्यालय को समझने के लिए पैदा करना होगा। आप सामंती लोग हैं, आप सामंती लोग हैं, लोग हैं। झा जी प्लीज आप बोले। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने जो भी बात कही है अपने जो भी सीमित ज्ञान है उस आधार पे कही है, और यदि चरवाहा विद्यालय वहां पे नहीं खुला हो या खोलने की योजना नहीं बनी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अपने शब्द वापस लेते हूं। लेकिन यदि चरवाहा विद्यालय और IIM की तुलना करें तो ये सदन निर्णय कर ले कि दोनों में देश को आवश्यकता किस बात की है। महोदय पहलवान विद्यालय भी खोला है, पहलवान देखिए मुझे तो पता चल रहा है पहलवान विद्यालय भी खुला। देखिए जाकी जैसी भावना, उनको जो प्रायोरिटी समझ में आ रही थी कि देश का विकास इस तरीके से उन्होंने किया। महोदय आपकी नजर आपस में बैठकर बात न करें, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा नजर में ही। अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि ये LIC, सबसे आग्रह कर रहा हूं पर्सन टू आस्क, GIC ये सारी चीजों का यू फॉलो द रूल्स, निजीकरण ना हो, फॉलो द रूल्स में निजीकरण ना हो। लेकिन इस देश में जो उदारीकरण हुआ, इंश्योरेंस कंपनियां पहले किस सरकार में आई, उस समय उसके साथ में कौन लोग थे, इसको भी वो ना भूलें। यदि हमने GIC को लिबरलाइज किया, LIC को भी हम अधिक एफिशिएंट बनाने के लिए अगर
कुछ हिस्सेदारी लोगों को दे रहे हैं, तो लोगों की हिस्सेदारी अभी बहुत सारे लोगों ने गिरते ब्याज के दर के कि सीनियर लोग क्या करेंगे, उनका आमदनी कहाँ होगी। महोदय, उनको निवेश का एक मौका दिया जा रहा है और ये अगर उनका पैसा सरकार की कंपनी में लगे तो कोई गलत नहीं हो। देखिए, हमने अभी एक वक्ता ने कहा, फौजिया जी ने शायद, कि किसी ने सपना देखा है कि स्पेस की फ्लाइट सस्ती हो। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा, जहां उन्होंने एक तरफ देश के सबसे मूलभूत, और लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं किया, पैखाने बनवाएंगे, लेकिन जहां उन्होंने पैखाने बनवाए वहां उन्होंने बुलेट ट्रेन का भी सपना देखा। और आज ये बुलेट ट्रेन टाइम बाउंड स्पीड से काम चल रहा है और समय से आगे तेजी से बढ़ रहा है। तो महोदय, ये जो सोच है ना, ये सोच की कमी हम समझते हैं कि इस पार्टी को तो नहीं है, इस सरकार को तो नहीं है, और ये बजट में भी परिलक्षित होता है। महोदय, जब ये हेडलाइन से यदि सरकारें चलती और हेडलाइन से यदि गवर्नेंस होते, तो आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हो, आपको मालूम है कि इस देश में या पूरे विश्व में जितने समाचार पत्र हैं उसमें व्यूज और न्यूज इसकी बातें बराबर होती है, और वहां पे जब छटनी हो जाती है उसके बाद में हम पाठक के तौर पे कौन कौन सी हेडलाइन पढ़ते हैं और कौन कौन सी हेडलाइन पढ़ने को हम भूल जाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। महोदय, यदि सेलेक्टिवली हम कुछ हेडलाइन को ले लें तो सही है कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रायः ये बात कुछ तथ्य है जिसको हम नकार नहीं सकते कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इस देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो। महोदय, हमने बहुत पहले हमारे कई साथी लोग, इनकी मित्रों की सरकार चल रही है, सहयोगी सरकार चल रही है, राजद के पार्टनरशिप की भी सरकार चल रही है, कांग्रेसी के सहयोग से भी सरकार चल रही है हमारे राज्य झारखंड में। मैं कहना नहीं चाहता था महोदय, लेकिन जब सारे राज्यों की बात हो रही है और वो अपनी बात कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा कहना चाहूंगा कि जब कोविड का समय था महोदय, अखबारों के पन्ने भरे रहते थे और सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लोग, सरकार बार बार बोलती थी हमें खजाना खाली है हमारा, और जबकि उनके यहाँ आज स्पष्ट हो रहा है कि अरबों रुपए उनके पास डिपॉजिट में पड़े थे। महोदय, यदि हम वुमेन इंश्योरेंस की बात आज कोई कर रहा था, तो उनको ये बता दूं मैं कि पिछली सरकार हमारी जो थी उसमें हम 1 रुपए में महिलाओं को रजिस्ट्री करा रहे थे जमीन की। इस सरकार, जब से कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आई है जिसमें आरजेडी भी पार्टनर है, इन लोगों ने पहला निर्णय जो लिया उसमें उन औरतों का जो रजिस्ट्रेशन, जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम था, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया महोदय। और आज हमें बताया जा रहा है कि औरतों को इंश्योरेंस कराइए। महोदय, अब हम दूसरी बात बताते हैं कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने प्रावधान किया था, और कांग्रेस पार्टी बराबर कहती है कि सीधे योजना फायदा पहुंचाया जाए। अच्छी बात है, हमने भी वही किया। हमने 5,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति किसान को देने की व्यवस्था की थी और वो चल रही थी। इस सरकार ने आते ही हमारे पास में, इस झारखंड सरकार ने सीधे उस योजना को बंद कर दिया। हजारों किसान, लाखों किसान जो इससे बेनिफिट पा रहे थे वो वंचित हो गए। महोदय, लोन वेवर का एक स्कीम लाए जिसमें कि उन्होंने, सबको मालूम है कि लोन किस तरह दिए जाते हैं और किस तरह वेव किए जाते हैं, तो उसके बारे में उनकी प्रायोरिटी जो देश में बोलते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट, दैट इज की डायरेक्ट बेनिफिट, लेकिन जब वहां आता है तो उनको होता है कि लोन दे दो और उसके बाद में उसको वेव कर दो। हमारे मंत्री जी जल विभाग के मंत्री हमारे बगल में बैठे हैं, कुछ दिन पहले झारखंड में दौरे पे गए थे। वन ऑफ द पोरेस्ट परफॉर्मेंस नल से जल में इज अबाउट नॉट इवन अबाउट 40%। ऐसी स्थिति है, तो अब वैसी स्थिति में यदि आप राज्य को केंद्र की नीति के साथ में चलाएंगे नहीं, तो जनता को जो अधिकार मिलने हैं, जनता का जो सशक्तिकरण होना है, उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे पूरा करेंगे महोदय, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। महोदय, जब हम भविष्य की ओर देखें तो हम सभी घरों में नल से जल देने वाले हैं। आज बिजली की क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे बंगाल के साथी लोग हैं, मैं देखा था, मैं जब बड़ा हुआ उस समय वो दिन भी उन्होंने देखे, मैं ये नहीं बोलता उनकी सरकार थी, लेकिन
ऐसे दिन भी बंगाल में देखे हैं जबकि 12-12 घंटे पावर कट लगातार होता था बिजनेस सेक्टर में। कभी 12 घंटा इधर, आज इस हफ्ते 12 घंटा दिन में बिजली आएगी तो कभी रात में बिजली आएगी। ऐसे दिन भी देखे, ऐसे दिन भी अब नहीं है, मैं मान रहा हूं अब नहीं है, लेकिन ऐसे दिन भी देखे हैं। लेकिन इस देश को उस परिस्थिति से, वैसी परिस्थिति देश के बहुत सारे राज्यों में थी। आज के दिन में सारे राज्यों में और देश में बिजली सरप्लस है, इस बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। हर घर तक बिजली पहुंचने के बाद भी सबको हम बिजली दे पा रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 7 साल में 17 गुना सोलर पावर हम अधिक पैदा कर रहे हैं, इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। महोदय, ये कोई आसानी से नहीं हुआ, इसमें सरकार ने एक व्यवस्था की और निजी क्षेत्र ने अपनी उद्यमता दिखाई, दोनों ने मिलजुल करके ये काम किया है। और मैं समझता हूं कि सही तरीका यही है। और जो मैं पहले भी कहा था कि जो 70 साल में जो काम हुआ उसके आंकड़े देख लें, किसी भी चीज के, किसी भी विकास के आंकड़े को देख लें और 7 साल में देख लें और दोनों की रफ्तार को जोड़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि यदि अगले 17 वर्ष तक यदि इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो कोई कारण नहीं कि हम विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक होंगे। सही बात। महोदय, इस साल का बजट न केवल इस वित्तीय वर्ष का बल्कि आने वाले 25 वर्षों में आने वाले दशकों का प्रतिबिंब है। चाहे वो गति शक्ति मास्टर प्लान हो, अब महोदय 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया राज्यों के लिए कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपको जरूरत हो तो आप ये न बोलो कि हमें धन की कमी है। हमारे राज्य का बजट आया पिछले दिनों, महोदय एक भी योजना ऐसी नहीं है जो इस केंद्रीय योजनाओं के साथ में जोड़ करके उसको सप्लीमेंट करने के लिए बनाई गई। महोदय, यदि ये काम राज्य नहीं करेंगे तो किसका दोष है? यदि वो वहां के लोग वंचित रह जाएंगे तो किसका दोष है? अभी हम जो देख रहे हैं कि 13 नेताओं के वैश्विक सर्वेक्षण में, जिसमें सारे बड़े देशों के लोग थे, और उसमें पीएम मोदी जी को 77% की रेटिंग हुई। मैं नहीं समझता हूं कि इस देश के बाहर कोई बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट किए गए जहां, जैसे कि यहां राजधानी की सरकार करती है, या कोई प्रभाव करने की कोशिश की। और मैं ये मान के चलता हूं कि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंस रखा होगा अपने सर्वे के मामले में, तो जो दूसरे इंडेक्सेस थे उनके साथ इनको हम ना जोड़ें, क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल ओवरटोन भी होगा। लेकिन इस देश में यदि ये सरकार बार बार जीत रही है, राज्यों में जीत रही है, सबसे बड़े राज्य में जीती है, फिर दोबारा जीती है, एक इतिहास रचा है इन्होंने, तो क्या इस सरकार की विश्वसनीयता का, और ये सरकार की विश्वसनीयता केवल नाम से नहीं होती, केवल नारों से नहीं होती, केवल गरीबी हटाओ के वायदे से नहीं होती, जो कि एक जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें झाग होता है कि जिसमें केवल झाग ही होता है, कंटेंट नहीं होता, दिखता जरूर है वो सब वायदे थे, वो सब नारे थे। ये वो नहीं है। अगर हम डिलीवर नहीं करते तो हमें ये विश्वास दोबारा नहीं मिलता। और मैं कह सकता हूं कि ये विश्वास अब हमने डिलीवरी मैकेनिज्म को, अब हमने यही सच्चा और अच्छा विकास है। इसे आप भी स्वीकार कर लें, इसे आप भी स्वीकार कर लें और आप इसमें सुझाव दें, साथ चलें। लोगों ने आपको भी विश्वास दिया है, लोगों ने आप पे भी विश्वास जताया, आपसे भी लोग अपेक्षा करते हैं, आपको भी मौका दिया, आपने नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं, तो हमें रोकिए मत, बल्कि हमें सहारा दीजिए, हमें प्रोत्साहन कीजिए। महोदय, ये जो धारा अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पे विपक्ष रो रहा था और पूरा देश परेशान था कि ये हो कैसे रहा, और हो गया। इसी सदन में जो एक चार्ज एटमॉस्फेयर था और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो गया, पूरा देश अचंभित था। उस समय बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की गई थी इसी सदन में। आज कृपया मैं आग्रह करूंगा अपने मित्रों से, वो उन आशंकाओं को पढ़ लें और आज की वहां की जो स्थिति है उनको पढ़ लें। यदि आप प्लीज बैठकर पीछे ना बोले, प्लीज पीछे बैठकर ना टिप्पणी करें। अब मैं डेटा दे रहा हूं आपको। महोदय, कश्मीर में एक रोशनी कानून था, मैं डेटा जानना चाहते हैं ना, करीब
सीएजी ने इसको 25,000 करोड़ का घोटाला बताया है। Are you happy? ये डेटा सुनिए। 25,000 करोड़ का घोटाला बताया है जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य में, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले राज्य में, रोशनी घोटाले के। और करने वाले कौन थे घोटाला? यहाँ के अभिजात वर्ग के लोग, सत्ता में बैठे लोग। अभी उसको हटाया गया, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले। महोदय, जो लोग डाटा चाहते हैं ना, मैं उन्हीं से कहूंगा वो हमसे ना मांगे, वो डाटा जो पब्लिक में डोमेन में अवेलेबल है उनसे मांगे, और उससे ज्यादा उनसे मांगे जो इनको वोट देते हैं। पब्लिक ने यदि वोट इनको नहीं दिया, मुझे याद है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि हम चुनाव जीत के दोबारा आ जाते हैं तो हमारा सब कुछ। एक मुख्यमंत्री, मैडम प्लीज, आप घोटाले में रखें, अगर सदन चलाना है तो प्लीज। एक मुख्यमंत्री घोटाले में फंसे, फिर जनता ने उन्हें भी करे वोट दे दिया। सबसे निवेदन मैं कर रहा हूँ, आप बैठ कर टिप्पणी न करें, मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, प्लीज। यू आर नॉट। कौन सा तरीका है? सबसे आगे कर रहा हूँ मैं सारे सदस्य, प्लीज। मैं माननीय सारे सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, एक दूसरे पर अगर आप कुछ कहते हैं तो धैर्य रखें। अगर बैठकर आपस में रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस चलाने का आप तरीका बताइए। बैठ करके आप लोग लगातार, कुछ लोग हैं डू नॉट फोर्स में, मैं सबका नाम लूंगा जब अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस करेंगे तो। अगर आप मर्यादा से चाहते हैं तो जो कुछ आप कहते हैं उसका प्रत्युत्तर सुनने का धैर्य रखिए। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है। हर तरफ से मैं देखता हूं कुछ लोग बीच में शोर कर रहे हैं, और आप सदन में चाहते हैं कि आपकी बात गरिमा से सुनी जाए, शांति से सुनी जाए, अपेक्षा भी करते हैं। कैसे संभव है चेयर के लिए? प्लीज। महोदय, मैं फिर आता हूं बेसिक्स पे। जब शौचालय की बात हुई और जब देश में 10 करोड़ शौचालय बने, मैं मुख्यमंत्री की बात बाद में आऊंगा, 10 करोड़ शौचालय बने तो पता नहीं कुछ लोगों ने कहा कि वहां पानी नहीं है। बात सही है कि हमारे गांव में पानी नहीं थी, पानी की किल्लत थी, लेकिन फिर आप देखिए कि इसको हमने किस तरह से स्वीकार किया। आपकी आलोचना को हमने इस आलोचना को रचनात्मक कार्यक्रम में बदला और ये तय किया कि हर घर तक नल से पानी देंगे। देखिए आज 6 करोड़ हो गए, 6 करोड़ घरों तक पानी पहुंच गया। महोदय, आपकी आलोचना ऐसा नहीं है कि हम इस कान से सुनते हैं उस कान से निकालते हैं। आपकी आलोचना को हम स्टोर करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोला, इसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं। आपने कहा टॉयलेट में पानी नहीं, हमने कहा बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं ऐसी दिक्कत थी तो हमने उसको दूर कर दिया। अब आपको पीने के लिए भी पानी मिलेगा, टॉयलेट के लिए पानी मिलेगा, लेकिन शायद इनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट हमको मिलेगा। महोदय, एक और आंकड़ा देता हूं महोदय। 2014 में कांग्रेस ने कहा था कि इस टॉयलेट की योजना, स्वच्छता निर्मल भारत की योजना जो थी, उसको 13-14 में 4200 करोड़ का बजटीय प्रोविजन था। महोदय, ये निर्मल भारत में मान गया कि ये उनकी ही योजना है, लेकिन संशोधित अनुमान, रिवाइज एस्टिमेट वाज ओनली 2200 करोड़। 4200 करोड़ में से खर्च केवल 2200 करोड़ हो पाया, करीब आधा। महोदय, ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े जो है ना, वो लोग पूछे जो कि इस आंकड़ों से बेहतर कर सके, उनको भी मौका है। अभी भी हर पार्टी के, इस देश के हर पार्टी का कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में प्रतिनिधित्व है, वहां पे वो केंद्र से बेहतर करके दिखाए। मैं तो इस बात की चुनौती देता हूं कि आप अपने राज्य में अच्छा करके दिखाइए, तो और तब हमको अच्छा लगेगा, हमारे लिए भी एक चुनौती होगी। लेकिन हम तो देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं आगे कोई कंपटीशन नहीं दिखता सिवाय झूठ सच के, क्रिटिसिज्म के। महोदय, ये चलने वाला नहीं। एक समय था जबकि भारत नेता की जगह विश्व में देशों का फॉलोअर हुआ करता था। हम पिछलग्गू माने जाते थे और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग मानते थे, लेकिन हमने एक आर्थिक जगत से, आर्थिक अपनी उद्यमिता से आज यदि हमारा निर्यात कई गुना बढ़ गया और बढ़ते जा रहा है। महोदय, इस सदन में शिपिंग मंत्री भी बैठे हैं जो पुराने थे। ये तथ्य है कि आज के दिन में इस देश से निर्यात इतना हो रहा है कि यहां पे भेजने के लिए कंटेनर नहीं मिल रहे, और उनके पास में, शिपिंग मंत्री के पास में बार बार
तो निर्यातक लोग शिकायत लेके आते हैं कि हमें कंटेनर दिलवाइए, हमें कंटेनर दिलवाइए, हमें पोर्ट में जगह दिलवाइए। महोदय, ये अचानक नहीं हुआ, लेकिन हाँ 7 साल में बदलाव आया है, और इस बदलाव के लिए यदि हम अपनी पीठ थपथपा के सोए नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी रोज एक नया दायित्व अपने पार्टी के सदस्यों को देते हैं। रोज बड़े स्तर पे मंत्रियों को कितना दायित्व देते होंगे और क्या चैलेंज देते होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन एज ए कार्यकर्ता आई नो दैट एवरी डे ही इज गिविंग वन विजन, वन टास्क एवरी डे। दिस इज व्हाट इज द थिंग। और जब हमने अपने उपराष्ट्रपति जी ने अभी हाल में एक बात कही शिक्षा प्रणाली के बारे में कि भारतीयता के महत्व को क्यों हम नकार रहे हैं, क्या हम भारतीयता के पद्धति से शिक्षा नहीं दे सकते? हम समझते हैं हम दे सकते हैं, हम समझते हैं हम दे सकते हैं। महोदय, 35 साल को लग गए हमें शिक्षा नीति बनाने में। यदि हम शिक्षा जी भगवा में, यही मैं पूछना चाहता हूं कि भगवा में आपको दोष क्या नजर आता है? सही बात। यदि लाल में दोष नहीं है, यदि हरे में दोष नहीं है, तो भगवा में क्या दोष? हरे में दोष नहीं, लाल में दोष नहीं, तो भगवे में क्या दोष? महोदय, माननीय अटल जी ने एक बार कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। महोदय, इस देश में बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक साधारण सदस्य के नाते, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते, एक साधारण नागरिक के तौर के नाते मैं इस सदन के सारे सदस्यों, चाहे इधर बैठे या उधर, कहते हैं कि हमें हर कुछ वो कदम उठाना चाहिए जो इस यात्रा को हम अधिक तेजी, गति और शक्ति दे सके। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। Honorable Minister to reply. So thank you very much, sir. And I thank more than about 15 members, 16 honorable members who participated in this debate. Of course, talking on two bills which are simultaneously brought up for discussion. The supplementary demand for grants 21-22 and also these excess demands for grants for 2018 and 19. I thank every one of the members who have spoken. Quite a few points which are part of the supplementary demands have been raised with questions about why at all such demands will have to be raised by the government if only it looked into these matters in time. This was raised by a few members, particularly on the excess demand for 18 and 19, which has been brought here now. I would like to take a minute to explain as to why the excess demand for grants pertaining to 2018 and 19 is coming in now in 2022. I quite appreciate the concern of the honorable members, particularly when it comes to the question of utilizing public money. And if there is a delay in coming and seeking approval of the House, it's only natural that members will raise concern about it. And I'm here, duty bound, surely, to answer and remove any apprehension that may be in the minds of the honorable members. I would first of all like to say, although it is coming in for approval for the excess that has been used in 18 and 19, there has not been any delay in coming here. It is, of course, related to 2018-19. But why has it come now here? It has come here for regularizing the excess spending of that year and
The need for regularizing it arises because the PAC, the Public Accounts Committee of the Lok Sabha, has clearly looked into it and said that we will have to go back to the House for certain heads of expenditure that has been spent in 18-19 in excess of what has been mentioned in the budget. And although it has been picked up, the PAC felt it has to go back to the House to get regularized, in the sense it should be again looked into by the House and then given that regularization and approval. And therefore we brought it. And when did that PAC report come to us? The PAC report suggesting that we regularize this, looking at the excess expenditure of 18 and 19, was submitted on 14th December 2021. And on 14th December 2021, when it was submitted, the time given for us to get the regularization, meaning approval again from the House, was up to June 2022. We are in March 2022. They have given us time to get the regularization done by June 2022. And abiding by that suggestion given by the PAC, we have brought that as a supplementary demand for grants to meet that expenditure which is already incurred in 18-19 as a regularization step. And that is why that has come. There has not been any delay. And from December, we have immediately taken and therefore come up with this supplementary demand for that excess expenditure which has been incurred for regularizing it. I just want to highlight the point. And what were those excess which was spent at that time? And if we can very quickly highlight the point, I would strongly believe that the members would appreciate as to why those expenditures were incurred and why, after the PAC having had a look at it and felt that it might be better for us to go to the House to have it regularized. The amounts spent were clearly narrated in the papers which have been distributed. I just want to recall that for defense services, 3,841 crores has been taken up for ration, fuel, oil, lubricants, medicals, and many other emergency requirement payment for the HAL. We are talking about 18-19, sir. I'm sure the honorable members will recall the circumstances in which these expenditure would have been incurred. For statutory and customs duties for critical ammunitions which were being brought in, imported stores, replenishment of and procurement of airborne and ground weapon armaments, and so on. So these were not expenditures which were incurred otherwise, but very essential, and therefore it has been brought in. Again, capital outlay for defense services has taken 1,257 crores. And where did they go? Allocation made at the B stage was insufficient, and therefore we had to spend more. Advanced light helicopter approvals were given by the CCS. Strike-off of wastage happened at the component levels for repair for T-90 tanks which came from Russia, and also progress of Rohtang Tunnel CSG roads which were built at that time, critical for connectivity, and some of the work progress which happened at that time happened faster than we thought, such as vehicle procurement cases, National War Museum and Memorial, obligatory contractual payments for shipbuilding contracts, and so on. So none of these expenditure could have just been met with what amounts were given in the BE. They had to be spent and later included. Therefore, when it came to PAC, they wanted to go back to the House, and that's where this is seen. So the supplementary demand for grants otherwise, except for the excess grant about which I've explained, are also aspects which are very important for us to appreciate for a moment. Several members spoke, and I distinctly recall Honorable Member Fawzia Khan also saying we need to have a lot more, human touch in the infrastructure
is important, we need to spend. We also need to have greater inclusivity in the budgets and so on. Just look at the supplementary demand for grants and see where this is going. And I'm sure Honorable Member Fawzia Khan herself and several other members who spoke relatively the same kind of highlighting importance on keeping the common man in mind. Look at the fertilizer subsidies, sir. 14,902 crores, which is coming through this supplementary demand. Indigenous urea subsidy, 8,270 crore. And the import of urea, last year you would realize that the price of the import of urea had spiked and we had to import it at that cost nevertheless. And after having imported it at that cost, the government did not push the burden onto the farmers. The entire hike in the imported fertilizers cost has been borne by the government. The farmers have not been made to pay even one extra paisa for the fertilizers that they had to. Sorry, ma'am? Please. I'm highlighting that we've done that, ma'am. So the import of urea, sir, 14,000 crores is included, ma'am, for Honorable Member Fawzia Khan, who felt strongly that you should have the common man's interest in your mind. This is that. Similarly, sir, labor and employment, also a part of the supplementary demand for grants. 10,260 crores, supplementary demand for grants. Where is this going? Contribution and grants in aid general under the scheme for employees pension scheme 1995. It goes for that. Rural development, sir, 9,668 supplementary demand. Fourth item under it. And where does that go? For providing additional funds for the NABARD for repayment of interest component under Pradhan Mantri Awas Yojana. It goes for the poor people, the houses. And it is for NABARD that we have given that money. So the supplementary demand for grants is not coming for anything else but to meet the pressing needs of government's schemes which are going for the common people. And therefore, Please. I'm coming for one by one. I'll certainly address CPF. Binay Vishwamji, I will certainly address it. So, then sir, there's a lot of concern, genuine concern, legitimate concern. I am with members when they speak with concern, particularly on the GST Compensation Fund. Supplementary demand for grants, item number 6, 8,292.75 crores for meeting expenditure on additional transfer to GST Compensation Fund. Sector is moving. We are not holding anybody's money back, and we are going as per what was decided in the GST Council. Sir, again, item number 12 of the supplementary demands for grant. Defense pensions, 1,028.52 crores. Please. Sir. Please, let her speak. So, item by item, I can highlight to say that the supplementary demands for grants is just in time to meet those very important common man related schemes, and it is for that this set of demands have come. So I'll probably just miss out naming the honorable members, but the issues which they've raised I'll try to address. Devolution of funds to the states was a very important part of Honorable Member Shakti Singh Gohil when he spoke about various things. Although we were talking about the supplementary demands for grants, Honorable Member has raised very many larger issues, some of which I would like to respond. Devolution of the state share in central taxes, sir. Just to set the background, I want to lay this.
In the RE 2021-22, 7.45 lakh crores have been done. And in 22-23 B, 8.17 lakh crores are being projected already for 22-23. The entire RE, revised estimate 21-22, has been released in February to enable states to spend in time. So the entire release for this year, as projected in the RE 21-22, has been released in February. There were some honorable members who also said you should do it in time, otherwise when the states are planning their budget, they won't be in a position to understand how they're going to get. I'm not even indicating to them, I have released it to them, totally. Therefore, Center has no interest, in fact, on the contrary, Center has an interest in helping states to get it in time. I take it as my duty, so that at least in these times when states are at the front end getting the economy to revive and also to come out of the pandemic related setbacks, states need the money, and so I have personally supervised once in November to release double the installment within 1 month, and again in February to release double the installment within 1 month, and in February itself clear the entire year's dues to the states so that they can plan for their next year coming. Another important such transfer, sir, which on the basis of what was agreed in the council, is that we borrow the money for paying the compensation because we were not earning as much as we need to pay to the states on the compensation. Transfer to the states based on the back-to-back loan arrangement which was agreed in the council was 1.59 lakh crores. That's already transferred to the states in time every month. Finance Commission grants, and as against the actuals of 1.84 lakh crores in 2020-2021, the outlay provided in 21-22 is 2.11 lakh crore. Transfers to states under centrally sponsored scheme 2020-21, 3.08 lakh crore, 21-22, 3.26 lakh crore, 22-23, 3.33 lakh crores. Not decreasing, on the contrary, increasing, and it should increase. But I want to draw the attention of honorable members. Nowhere is the devolution to the states being held back by the center. Central sector seems, sir. Actuals of 2020-21, 16,143 crores. 21-22 RE, 45,123 crores, and B of 22-23, 49,026 crores. So there's no reduction, in fact, timely disbursement. Sir, this one point which I want to seek your permission to say is not at all a part of this supplementary demand for grants. But in the context of GST payments and also this suggestion that no, the center has been not fair about distributing GST compensation, and also raising a matter which has been long settled, solved, about an IGST payment, on which questions were raised by an honorable member. I would like to highlight, sir, point by point, I'd like to say this. Till 2018-19, when a formal system of disbursing, dividing, sharing IGST came into play, that system came into play only in 2018-19. But till before that, the IGST which kept accumulating, in 2017-18, much before the system of per
proper formula distribution of IGST came into play in 2017-18, by the end of that year itself, 1.76 lakh crores had accumulated under the IGST. This is not a matter which is pending now. I'd like to make it clear. But that time when there was no formulation, the GST Council decided that we need to quickly disperse this accumulated amount. Why is it sitting there? Please, can it be divided? So an ad hoc decision was taken by the then council to split the amount 50% to the states and whatever 50-50 arrangement was done. So the amount should be distributed, apportioned among states and centers, had happened well before May of 2018, if I remember correct. Then the GST Council, which met, 37th Council, which met in September 2019, spoke about this particular division of IGST and said it has been, ad hoc divided between the states. Can we have some kind of a formulation per that, so that any leftover amount can also go back rightly to the states? So in September 2019, a group of ministers was formed, and that group of ministers went into the detail of how this division had been formulated, before the formulation came to place, how it was divided, what is the amount left behind, and how is that going to be shared. Now this group of ministers, I'm not sure if Honorable Member Sushil Modi is here, under his chairmanship when he was Deputy Chief Minister and Finance Minister of Bihar, he had gone through this whole thing along with other ministers, and on 4th December 2019, this group was constituted and a report came in to see how it has to be divided, and if any excess that was paid to any one state, how is that to be retrieved? Should it be retrieved then or should it be retrieved later? All this had been gone through in greater depth. On 16th May 2020, I had taken a decision after looking into all the recommendations which have come that this amount should be apportioned and consequential transactions should also be all carried out. So that entire issue of IGST and the pending payments, excess payments, reversal of excess payments, all that had been threadbare put in file, and reversal of transaction was split in 2 different stages. Even that had been accomplished, where in the first step, 33,412 crore was transferred into the compensation fund, because from consolidated fund you don't deal with GST. Compensation fund is the one which receives it. The result of recovery of compensation given to states as a result of release of IGST, which has to be shown to them. In November 2020, sir, another 25,058 crore was released to states as the remaining share of that IGST issue, which was pending for the states. In all, through these 2 releases, central government released 58,470 crores from the Consolidated Fund of India for that transaction of the IGST, which till before 2017 and 18 did not have a formulation, and the GST Council had only ad hoc decided, please split it between the states and center. That entire episode had been gone through a GOM, which had all ministers in it. From the GST Council, a lot of ministers headed by Shri Sushil Modi, and after which, based on the recommendation, that entire episode of IGST pending payments had been cleared well before December of 2020. So I want that to be clearly put on the table, sir, so that members who would want to see it and get more details can get it. So IGST, no more pending amounts. Now everything goes per formula, per month, as it is collected, and there's nothing kept back. So there was a small confusion, I think, or if I have not understood correct, I'd like to stand corrected.
talking about GST cess collection based on which compensation is paid, and that cess in the GST dispensation is levied only on sin goods, and those sin goods are already specified, notified and mentioned. That is one thing on which the center doesn't do anything. It is per the GST formulation that money keeps going to the states as and when that collection comes into the compensation cess fund. That is the compensation cess, which is under the GST regime. That cess is not to be mixed up with, say, the education and health cess, or the road cess, or any such cess which the central government collects, over which the usual observation would be, oh well, that doesn't come under the part of the Finance Commission's devolution formula, it is something which the center takes away, it doesn't come to the states. Of course it goes to the states, but never mind, that's a different debate. But the GST compensation cess need not be confused with the cess that the central government collects, and that GST compensation cess, the central government has nothing to do with it. It is done and disposed of per the formulation which is in the GST Council. So if there is any confusion about, oh, cesses are all with the government, no, sorry, GST compensation cess is under the control of the GST Council. So there were one or two questions on insurance companies and their increasing losses. So I'd like to respond by saying 5,000 crores have been proposed for recapitalization of public sector insurance companies in this third batch of supplementary demand for grants. This recapitalization, sir, is linked with improvement in certain performance indicators of these companies. This will help them to reduce their losses and to improve their overall financial condition. Because we are talking of insurance companies also, and because many members raised this issue, sir, eligible policy holders of LIC will also be entitled to get the IPO issue, because there is a reservation of up to 10% of the issue size for policy holders, and they may also get a discount on the offer price. So as regard the LIC issue, policy holders' concerns were raised, and also on the embedded value itself. Member Shantanu Sen had raised it.